The journey from mooting to courts. Over to you, ma'am. Hello, everyone. I hope everyone is doing fine, and I'll use mix of Hindi and English. I hope everyone is okay with this. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, Maitri has given my introduction. My name is Simran Gill, and I'm an advocate practicing in Delhi. And I've also started working in my organization, which I started in 2021, but I have been actively involved in social activism related to gender rights, sexual abuse rights, women rights, and children rights since 2019. So today's meeting is I'll share my experience so far in litigation with you, and I hope you will take something from it, and I hope it will be useful to you in your future career. So I want to just Maitri ask one question. Which laws, which year students are present here today? Is it all from 1 to 5th? Can you repeat it, actually? Yes, ma'am. Okay. So I talk about for 30 minutes, 45 minutes, and at the end of the session, you can ask me some questions one by one, and then I'll try to answer them as much as I can. So first thing that I would like to start with is you are in first year, and college life and litigation are very, very, very different. When you are in college, you are in a very protective environment. Your teachers are there to help you, and everyone is there to guide you, and there is a lot of scope for mistakes. So life completely changes, and it's not that सिर्फ ऐसा litigation में होता है. Life completely changes once you start working, once you go out in the field and you start working. And litigation is considered one of the toughest professions in the world, and that is for a reason. And I totally agree with it. Even though I've got a lot of jobs, I've been a teacher also. I've worked as a writer also. But this I feel is a very, very stressful and one of the most difficult jobs in the world, which is why I think at later stage it's also considered one of the highest paying jobs, but it's only for the some. Most of the people in litigation, most of the life, they struggle to make ends meet, and that is one very bad reality of India that we have today. Even if you are graduate from a really good college, and even if you've been a topper in your college, a lot of these things don't matter when you come on the field, and you'll have to spend a lot of time in just surviving. So हम लोग के कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर से ये सब बताया जाता था कि डोंट थिंक अबाउट अर्निंग मनी फॉर 2 or 3 years, 5 years. Just give yourself to the profession, and you can only survive in this profession if you have passion. That is true. A lot of people join litigation thinking that lawyers are very rich, lawyers are very powerful, and we also want power. We also want to become rich, so that's why we'll become lawyer. But a lot of people give up in between, and it's very, very difficult to cope up and keep on going in this profession if you don't have passion to you'll have to find your own thing in this profession also. What is that is motivating you? यहाँ पे बहुत तरीके के आप ये तो सब बोलते होंगे that's a social service, it's a noble cause, and then you'll help others, but you'll have to understand what interests you the most, what is your motivation, what is your passion. और ये time अभी आपके लिए golden time है in college that you figure it out कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है. एंड ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक भी नहीं पता चलेगा, बट बाय द टाइम यू आर इन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर you should really have a clarity कि what do you want to do, why do you want to become a lawyer. It's a very सिर्फ litigation के लिए नहीं, बहुत ही important life lesson है that no matter what you are doing, you should have answers to four questions all the time. What you are doing, why you are doing, how you are doing it, and for who you are doing it. So आपके पास भी ये questions के answer होने चाहिए by the time you graduate, क्योंकि if you're not clear about what you want to do, and even 1 to 3 years in practice, you have that time to figure out कि अच्छा, okay, I want to do civil, I want to do criminal, I want to do
commercial litigation. So you go to different seniors and you'll work with different seniors. You realize what is that interests you the most. So take this time very very seriously. In और वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता है समझना दैट आपको क्या इंटरेस्ट करता है. जब जो भी चीज करते हुए जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए इफ यू आर एंजॉयिंग दैट सेशन, इफ यू आर एंजॉयिंग दैट सब्जेक्ट, दैट मीन्स दैट इज something that you like, that is something that you can work for. And there are two types of lawyers. There are one type of lawyer who do all types of cases, and there are other type of lawyer who specializes. Now, from what my experience is so far, I feel like specialization lawyers are the ones who have really excelled in their field. Otherwise, if someone is a struggling lawyer, a new lawyer, and it's really difficult for them to choose a field unless and until unke I'm taking civil, criminal and family matters, but मैं बाद में जाके अपनी specialization I can choose. But आपको ये सब पता होगा कि as a lawyer आप या फिर आपसे law college में भी पूछ लेते होंगे, बहुत सारे लोग सब पूछते हैं कि specialization आपकी क्या है, आपकी field में क्या है. That answer you should have from day one after you graduate. कि आपको specialization कहीं किस में करना चाहते हो. वो चेंज भी हो सकता है, एक साल बाद चेंज होता है, 2 साल बाद चेंज होता है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव वन आंसर. ओके, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग इन, एंड these are the type of cases that I'm taking. So that is one thing. Second important क्या होती है लॉयर की ड्यूटी, उनका मेन काम क्या होता है. To serve, someone is saying Manasi, to serve others. Okay, anyone else? To represent your client. To represent your client. Okay. To speak for the right one. To speak for the, always be legally right and to speak for the right people. Lawyer, you will have to defend both the sides of people because हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक लॉ तो है ही दैट नो मैटर व्हाट एवरीवन हैज टू बी डिफेंडेड, एवरीवन हैज टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस और प्रैक्टिशनर ऑफ देयर ओन चॉइस. अगर नहीं है, even if they cannot afford a lawyer, government provides them a lawyer. So very important task of a lawyer is to represent their client, to represent the person and to represent their story. कि actually उनकी story क्या है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने crime क्यों किया या फिर उनके साथ गलत हुआ है तो किस situation में और क्या क्या उनको उससे. So इसलिए very very important is to understand your client story. तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना हमारा काम तो मेन काम है ही, लेकिन बहुत बार ऐसे लोग बोल देते हैं कि क्लाइंट इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और इवन इफ इट मींस दैट यू आर लाइंग फॉर योर क्लाइंट, समटाइम्स झूठ भी बोलना पड़ जाता है क्लाइंट को, दैट इज इन द क्लाइंट इंटरेस्ट. आई एम ऑफ द व्यू दैट आई एम completely अगेंस्ट it. So I had this question when I was in college also, because everyone around was saying कि अरे नहीं क्लाइंट के लिए कभी कभी झूठ थोड़ा बोलना पड़ जाता है, you have to mold the truth and etc. You have to hide this thing, you have to forge some documents etc. That is not a job of a lawyer. That will never be a job of a lawyer. That is completely illegal. कोर्ट में झूठ बोलना तो illegal है ही. So how can that be a duty of a lawyer? That's never. Generally बोलते भी lawyers का काम होता है झूठ बोलना, lawyers are liars. All of these is completely untrue, because what is illegal on paper cannot be a job of a lawyer. You cannot just go in there in order to saying that you want to you're working for the interest of your client, you're forging some documents. That is completely not allowed. That will not make you a good lawyer, and good lawyers don't do that. They never do that. They will play tricks. They can be very skillful in deciding what to tell, what not to tell, but no good lawyer wants to forge documents or want to lie in court, and you should not do that. Because if you are lying for your client, and let's say your client is the one who has committed the wrong, if they are the criminals, if they are on the wrong side,
it can't be your duty to lie for them and support criminals. That is not our duty. That is what I have understood. That is what I have realized for myself. Apni morality, you'll have to also make your own morality in this. So काम होगा कैसे? If a client is coming to you, if a person is coming to you saying that they have committed a murder and they want you to defend them, तो आपको क्या उनको client represent नहीं करोगे? नहीं, आपको represent भी करना पड़ेगा क्योंकि you are in this profession and it is a duty of a lawyer to represent anyone who comes to you if you want to. So let's say you have taken a case of a murderer and he's saying I have murdered but I don't want to go to jail. What are you going to do? What is the right solution? How are you going to lie in the court to save that person? And you'll only do it, people only do it when they are paid. You're not going to save a criminal. You're not going to lie for them unless and until you're getting a lot of money for it, which a lot of people cannot afford. And a lot of people won't even do that for money because everything, morality can't be buy with money. But there are all types of people in the world. So one person is saying, I won't lie. Argue for lesser sentence after understanding the mitigating factor in the cases. Use general exceptions to justify the act. Exactly what you're saying. So उससे पहले लेकिन आपको stage आएगी, all of this, you will not be able to do all of this that you are saying, because the moment you will say, I will not, to your client, that I will not fight for your acquittal. I agree कि ठीक है आपसे गलती हुई है, it was by accident, the murder was by accident, you were driving and accident happened, that is all different thing. But the fact that you have committed a murder and I will not fight for your acquittal in the court. A lot of chances client तो चले जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे नहीं भाई ये कैसे, क्योंकि there are a lot of people in the world, अलग-अलग तरीके के lawyers हैं. Someone will be ready to lie for them, someone will be ready to say कि नहीं. And court में actually होता भी यही है, तो बिल्कुल opposite side of stories होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि someone is saying okay इसने murder किया, the other one is saying okay अच्छा okay I have committed murder but this is what has happened. But and that's why जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो लॉ में है वो इतना डिफरेंस है. जो आप लोग कह रहे हैं हम मुझे भी यही लगता है. अभी आप लोगों ने जितने आंसर्स दिए दैट you will argue for lesser sentence, you will argue for on the factors, just situation में crime commit हुआ etc. But the world completely changes once you are in litigation. So in court you will see the two sides of the story. One is saying this person has done it, other is saying I am innocent, I was not even there. To that extent court में झूठ चलते हैं, the lies are told in the court. And इसी बस ये काम हो जाता है जज का to find out which इसमें कौन सा सच है, इसमें कौन सा सच है, and then to give you the judgment. So you have to be very 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 careful. And it's not that हमेशा झूठ ही बोले जा रहे होते हैं. Loopholes, सबसे important चीज जो litigation में होती है वो होता है loopholes to how to draft, how to tell your story in such a way that you are not lying, you are helping your client, but you are also not helping a criminal. And that is, I think, the most important difficult task for a lawyer. इसीलिए सबसे पहले important जब आपके पास client आते हैं, जिसको client counseling बोलते हैं, client dealing होते हैं, it is truly very difficult job, क्योंकि ये हमें college में नहीं सिखाया जाता है. This is not taught to us in college, how to deal with clients, at least not as frankly as it should have been. How to client अगर आपके पास आए तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, what to ask for, what not to ask for. Because if you are going to tell your client नहीं, I am not going to save you, I am just going to say you did it, that person is going to go away from you. You are going to lose a client because you're not ready to hear their story. So इसीलिए आपको उनकी बात पहले समझना वो क्या बोल रहे हैं, and then you have to be a smarter person in the room than the criminal. And it's a fact that criminals are sharp-minded people. Criminals are sharper than normal people. उनका दिमाग तेज काम करता है. That is the reason they could, they can lie to people, they can manipulate people, they can fool people. And that is the main core of committing the crime. If you are committing a crime, there has to be a situation, either you are lying to someone, either you are manipulating someone, either you are whatever you're doing, but you fooling that person, but that means you are the smartest person in a situation. That is why you can fool others. And यहाँ पे इसीलिए lawyer का काम इतना important है. They have to be
smarter than criminals. And then they have to talk to criminals, because when criminals can also manipulate people, then as a lawyer you have to manipulate the criminal. So I'll give you an example. It will become easy. दो तरीके की काउंसलिंग करते हैं lawyers. एक तरीके की काउंसलिंग होती है, मेरे पास क्लाइंट आया है, the client has come to me and then they've said कि okay ये काम करना है. One type of lawyer will say और ये तो easy है, अरे तो हम करवा देंगे, हमारे तो काम है, हमारे जुगाड़ है, हमारे सोर्स हैं, all of these things. Even and there are two situations possible. Either they don't know कि ये जो मैंने बोल रही हूँ that I'll be able to do it, मैं करवा दूँगी तुम्हारा काम, ये possible नहीं है legally, and that will come from experience only. कि मुझे experience, मैंने कभी काम किया है तब मुझे समझ में आया. Let's say I'll give you an example, very practical example. Transfer petitions होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं पर भी ये लॉ नहीं लिखा हुआ है. But in transfer petitions, the unsaid law is that if you have to transfer a petition from one state to another, you'll have to go to Supreme Court, and the law underlying law is that it has to be more than 100 kilometers. So you can't get a case transferred from Haridwar to Noida. You can't get a case transferred from Haryana to Delhi. You can't get it probably from Mumbai to Goa, or Mumbai to Karnataka. But it has to be more than 100 kilometers at least. ये बहुत mitigating factor है. And now that a person who has not done transfer petition and उसके पास कोई client आता है transfer petition के, and they say कि नोएडा से दिल्ली transfer करवानी है case, so that person will say, oh yeah हम करवा देंगे. It's an easy thing, because transfer petitions are generally very easy things, so करवा देंगे. But ये situation गलत हो गई, because this is not possible. When you'll go to the court, when you'll fight, you'll realize that this is just not possible. You cannot get a case transferred from Haryana to Delhi because it's less than 100 kilometers. But you've already said to your client, "Arey hum to karwa denge." And this can come from lie. Either you're lying to your client, either you don't know yourself. And both the situations are possible. So, and दूसरे तरीके के होते हैं. मेरे पास client आया, they want to transfer the case from Haryana to Delhi, and I straight away say, no, this is not possible. If you want to try, still want to try, I'll give my best. I'll find some other excuses, क्योंकि इसके अलावा बहुत excuses होते हैं. It will be a difficult case to fight, but I'm telling you, this is not very hard to find. So, दो तरीके की counseling होती है, and the other counseling is that I have chosen for myself. I am not going to say to the client, "अरे नहीं हम तुम्हारे लिए कुछ भी करवा देंगे," because a lot of times the clients who come to us have done something wrong, they have committed wrong, and to support and to say that okay, we are supporting you and will help you out in whatever you want, that is somehow going to give a motivation for a commission of a crime, and which is completely wrong. क्योंकि सबसे important काम है lawyers को जिसे बोला जाता है, they are officers of the court. Before lawyer to a client, you are officer of the court. You have to be a communication between court and the client, because client don't understand courts and court don't understand client, and that is why it's such an important job of a lawyer कि सही से उनको counseling की जाए. अगर वो ऐसे कोई बात लेकर आ रहे हैं which is illegal, which is illogical, then you have to be very very straight to deal with your client, with the person, and tell them what you're saying is illegally possible, and I'm not here to go beyond the way to help you out. Although ये सब बहुत ज़्यादा चांस पर नहीं भी होता है, क्योंकि कोर्ट में जो लोग आते हैं, most of the people, they are actually suffering. उनके साथ कुछ गलत हुआ ही होता है, और last resort होता है जब वो दुनिया से एकदम थक हार जाते हैं, then they come to courts, because courts are a very difficult place to be at. Everyone here has power. Police has power. Police will harass. Lawyers will harass. Judge in a situation will harass. Opposite wala lawyer can do all of these things. So it's a very very difficult situation for any person coming to the court. So इसीलिए आपको client की ये बात तो समझनी पड़ेगी. They are coming in a very vulnerable and in a very difficult environment. And अगर आपने उनको अच्छे से ये mediation कर दिया, एक mediator बन गए हो आप कोर्ट और उनके बीच में, क्योंकि कोर्ट a lot of times don't work. And उसका पता है उसका भी बहुत बड़ी lawyers को सुनना पड़ता है. Judges on leave and नहीं आए, वो छुट्टी पे चले गए, वो नहीं कर रहे हैं काम. Clients tend to think that it's the lawyer who's not working. कि कोर्ट में ऐसी काम चलता है. So even if you believe in judicial system, if you believe in justice, you have to really talk to the clients and help them कि उनका belief इसमें बना रहे justice system में. So that is another important task of a lawyer, that you have to
maintain faith in the system, otherwise people will go crazy. अगर मैं जाके बोल दूंगी कि यार कोर्ट में कुछ नहीं होता है ऐसे, you don't waste your time coming to the courts. If as a lawyer, if I'm saying that, then people will probably resort to going out against each other. आपस में लड़ने लग जाएंगे. कोर्ट में जाने से क्या फायदा होगा? And कोर्ट में जाने से is a good place. It's a really good place to solve disputes, because disputes can get really ugly. People get murdered while fighting among each other. People lose money. People do all sort of things जब आपस में लड़ते हैं. And court is the most civil way to settle any dispute. I mean, you see in the court, there are two people arguing, there are two people fighting against each other, but when they'll go out of the court, they'll not be so bad to each other. मतलब लड़ने पे नहीं आ रहे, एक दूसरे को मारने पे तो नहीं आ रहे. And which is why it's so important as a lawyer, your duty, that आप disputes को भी एक अच्छे तरीके से you can help out in solving. And so that is the duty of a lawyer. It's not to lie. It doesn't mean that you have to lie. It means you have to understand your client's situation. You have to make a really good story out of it. Lawyer सबसे important होता है, storytellers होते हैं. If you can tell a good story in the court, you will be a good lawyer. So you have to understand the story. You have to listen to the client. You have to portray a story in a court such that it also benefits your client, but it also doesn't instigate crime in future. तो आपको कभी-कभी अपने clients की भी counseling करनी पड़ती है. It's very important. Now coming to the justice system, how courts work. Courts are a very, very exciting. It's like love-hate relationship in litigation. You will find all types of people in court. You'll find good people. You'll find bad people. You'll find all kinds of drama in court. People fighting amongst each other. People fighting in cases, but they're not fighting amongst each other because it's just a case for them. So court are very, very happening places. It starts from district court. District court में जहाँ पर सबसे ज़्यादा action होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, because in the district court only the process of trial, जहाँ पे cross examine होगा, जहाँ पे evidence होगा, ये सब चलता है. And that is the most important stage of a case at any given point of time. क्योंकि high court और supreme court में सिर्फ वहीं पे आर्ग्यू होता है जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में डिसाइड हो चुका है, ऑन पेपर होता है. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट हाई कोर्ट, अनलेस एंड अनटिल उसकी अलग से जुरिसडिक्शन किसी और तरीके से बन रही है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डोंट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. दे ओनली गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ लॉ. मीनिंग फैक्ट क्या हुआ, अगर आप लिख के आ चुका है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइल में दैट पर्सन वाज नॉट देयर at 6:15 p.m. So Supreme Court at any cost will have to accept that that person was not there at 6:15 p.m. No matter Supreme Court में आके दूसरे लॉयर ने बोल भी दिया या फिर प्रूफ कर भी दिया कि नहीं 6:15 पे that person was there. And that is one of very important thing for a lawyer to understand कि lower court से ही कैसे cases इतने strong बने जाने चाहिए, उनका evidence, उनकी cross examination, what is going on paper is like पत्थर की लकीर. So whatever you are writing in your drafting, whatever you are putting in your case will affect that person's life, a person's life for a very long time, and it might affect a lot of people's life, thousands of people's life. So you have to be very, very careful in district courts while fighting for the case. Now it's just not your skill that will count in becoming a good lawyer. A lot of things are required. First important thing, आपके पास skill होनी चाहिए. Client, आपके पास सबसे important skill होनी चाहिए client लाने की. Because if you have clients, no one will ask you, आपके senior के साथ काम कर रहे हो, no one will ask you how much money you are earning. No one will ask you if you're a good lawyer or not. If you have cases, if you have clients, and if you're going to court every day, आप जाने को मिल रहा है, then that's good to go. So client लाना is the most important thing. Second thing, important thing जो होती है वो होती है skill. आपको argue करना आना, कब कहाँ बोलना और कब कहाँ नहीं बोलना सबसे ज़्यादा important होता है. More than what to say, it's important what not to say. So you'll have to work on these skills. You'll have to work on your speech. कि आप कैसे कोर्ट में present कर रहे हो अपने आप को. You have to be always look. Thank God that there is a uniform because it solves a lot of problem. Because lawyers are really busy people. Sometimes they don't get to wash their clothes, or they don't get to iron their clothes or whatever. So black and white पे आपको रोज यही कोट पहनना है, पर आपको अच्छा दिखना है. और ये बहुत अच्छी बात है यूनिफॉर्म की, that you don't have to worry about wearing different clothes every day.
but you have to look very prim and proper in your uniform. का band अच्छे से लगा होना चाहिए, band tight होना चाहिए, ये सारी चीजें, because everything in this matters. Your shoes clean. So ये तो आपका पर्सनल हो गया कि आप अपना पर्सनल स्किल आपने अच्छा पूरा डेवलप कर लिया, आप क्लाइंट भी ला सकते हो, आपके पास स्किल भी है, आप अच्छी ड्राफ्टिंग भी कर लेते हो. और फिर भी अगर आप आई टेक क्वेश्चंस एट द एंड बिकॉज उससे थोड़ा ब्रेक हो जाता है. सो what is also important is that you understand the code कि how codes work. उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो आपको कोर्ट में जाके ये पता चलेंगी. मैं अभी बस कोशिश ही कर रही हूँ जितना मैं बता सकती हूँ उतना बताने की. How is judge in that judge का mindset, how is the judge mindset, whether a judge is left wing, right wing, left ideology है, right ideology है, he is inclined towards giving feminist judgments or not. Like चंद्रचूड का mindset काफी clear है that he's very pro feminist. So वो बहुत सारे judgments for women rights, for LGBTQ rights, he's going to do that in his tenure, but other judges were not. And judges are a very very patriarchal things. It's like sometimes I feel like in court में बैठ के there is like district court में there's this uncle who's sitting by and because that sometimes judges also ask questions that they should not ask, or they will just pass their time in courts. So judge have to be very very learned person, but sometimes they are not, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग पावर भी चलती है, करप्शन भी चलता है, सोर्स चलते हैं. So the person who's sitting in front of you as a judge, you don't know how meritorious they are, but you have to impress them all the time. So you have to understand them. You cannot argue with them. आप कभी उनसे तेज आवाज में बात नहीं कर सकते at any point of time. Like I was in court one time, and this person who was who was arguing really badly with judge. So you have to be always very nice, even if you don't like the judge. You have to be very nice. अगर आपको कुछ ऐसी बात भी बोलनी है, जब तक आप बहुत बड़े लॉयर नहीं बन जाते, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, तब तक आप जज से कुछ भी नहीं बोल सकते. You have to be very very respectful towards that. चाहे आप बाहर आके उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलो आपस में. So I was in this in court, and this person was really arguing over something for he has lost a bill or something, and then judge was asking how can you lost it? It's so important document. He was saying that ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? I lost it because he was appearing in person. So it's my daily work. It's not that कि मैं बिल्कुल नहीं खो सकता. खो गया तो खो गया. आप देखिए आपको क्या करना है. That was exactly the tone. Judge got really pissed. He said that I'll not take this case. I am recusing from this case. मैं नहीं सुनूंगा ये केस. अब उस पर्सन का टाइम वेस्ट हो गया. ऑब्वियसली वो केस दूसरे कोर्ट में जाएगा, पर वो वहां चलेगा, वहां पे भी क्योंकि रिक्यूज हो गया, एक जज ने सुना है, तो वो इंप्रेशन पूरा खराब हो जाता है. और बहुत बहुत छोटी चीजें भी मैटर करती हैं कोर्ट में. सो नेवर मेस विद द जज. यू अंडरस्टैंड द जज. डजंट मैटर यू डोंट लाइक देम, बट यू होमवर्क करके जाना कि वो कैसे. और इसका बहुत तरीका ये होता है कि आप उनके जजमेंट्स पढ़ो. आप उनका जजमेंट जब पढ़ोगे तो आप उनको माइंडसेट पता चल जाएगा. आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको कोर्ट में हमेशा अपने बेस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं देने होते हैं. आपको कभी-कभी कोर्ट में जज जो सुनना चाहता है वो बेस्ट आर्ग्यूमेंट देने होते हैं. एंड दैट विल ओनली कम इफ यू आर रीडिंग जजमेंट्स ऑफ दैट कोर्ट. आपको पता है आप कोर्ट में जा रहे हो, तो बहुत अच्छा तरीका है. इफ यू हैव अ कोर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल टुमारो आई हैव अ हियरिंग इन कोर्ट, तो मैं आज जाऊं कोर्ट में बैठूं पूरे दिन, इफ आई कैन ऑब्वियसली कैन अफोर्ड दैट मच ऑफ टाइम, आराम से उस जज को सुनूं सो दैट आई कैन नो अबाउट द जज. अगर आप रेगुलरली कोर्ट में जाओगे, यही फायदा होता है. प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो इसीलिए चाहिए था कि आपको जज पता चल जाए कैसे हैं, कैसे सारी चीजें काम करती हैं. समटाइम्स you have to get really strict also, really rude also बोलते टाइम कि नहीं, you have to not to the judge but to other people also, and कि किस तरीके से आपको अपना काम करवाना है वो आना चाहिए. And you can't, and lawyers generally don't fight. I think not very nice to say, but they don't fight with other people, but they manipulate other people in listening to them. कि आप हमारी बात मान लो, वो अपना काम करवा लेंगे. एज ए लॉयर मैं आपसे अपना काम, अगर मैं अच्छी वकील हूँ तो आपसे अपना काम करवा लूंगी जो मुझे करवाना है, by using whatever tactics that I use. I'll be nice to you. This is a problem also for lawyers, and this is a good thing also for lawyers, that they tend to manipulate others a lot. So कोर्ट का सिस्टम समझना बहुत जरूरी. अब बहुत अच्छा फायदा ये हुआ है, you have such a good opportunity that सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स लाइव हो चुकी हैं. सबकी जो लिंक होता है, सब वर्चुअल हियरिंग हो रही होती है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन.
आपकी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप उसमें कॉज लिस्ट निकालोगे तो आपको मीटिंग लिंक मिल जाएंगी. If you go to the Bombay High Court website also you will find if they are still doing it virtually. So अभी से आप शुरू कर दो एटलीस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो चल ही रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं आप जितना देख सकते हो. आप बोर हो रहे हो कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं क्योंकि वो एक बात ही बार बार रिपीट की जाती है. बट दैट इज वाई कि जज के दिमाग में बात घुसाई जा सके या फिर लोगों के दिमाग में बात डाली जा सके. सो बहुत आपके पास ये अच्छी चांस है कि अब अभी आप घर में बैठे बैठे अपने फ्री टाइम में आप लाइव प्रोसीडिंग्स देख सकते हो. एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट बिकॉज कोई सीनियर, कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं, कोई टीचर नहीं इतना अच्छा नहीं सिखा सकते जितना आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग सिखा सकती है. So you have to be very, very active in attending court proceedings. Whenever you have time, whenever you are free, try to go to courts and just sit there because district courts and high courts are free place to go for advocates and lawyers. Interns will have to get a pass, but district court में वो भी जरूरी है. तो district court जाना, you start going to your nearest district court, sit there. कभी family court में बैठो, कभी criminal court में बैठो, कभी civil में बैठो. Why I'm saying this is that you will save a lot of time by doing this in your litigation. Because I'll tell you what happens in litigation. People spend 4-5 years of time. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए. वो अभी भी बहुत बेसिक चीजें में अपना टाइम लगा रहे हैं. मतलब 2-3 साल के बाद आपको ये तो क्लियर प्रैक्टिस, आफ्टर 2-3 years of practice, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि आपको करना क्या है. अब आप यहाँ हो क्या, या फिर व्हाट इज दैट फील्ड यू वांट टू चूज. डजंट मैटर, आप केसेस सबके ले लो, बट आप अपना फोर्टे बना के चलोगे. एंड दीज आर द थिंग्स that you can think in college, क्योंकि कॉलेज में एक बहुत अच्छी चीज होती है that you get time to think. खाली टाइम होता है जिसमें आप सोचो, आराम से बैठ के सोचा करो, कुछ मत क्या करो, बैठो सोचो. यू थिंक अबाउट all the things. Why are you here? Why are you doing law? क्यों किया मैंने लॉ, कि मुझे लॉ करना भी है, मतलब मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे किसी ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला, और that I am doing it. But now I am here. What should I do? How should I make a best use of it? Because there are thousands of opportunities in law. It's just not you can become a lawyer. You can become a lawyer also, you can become a judge also, you can become a public prosecutor, you can become a panel lawyer, you can become a company lawyer, you can join some ministry office, you can go for policy drafting, you can go for social service. मतलब इतने ज़्यादा, you can become a minister, इतने ज़्यादा fields खुल जाते हैं law के बाद. I mean, even after law there are thousands of things to choose from how you want to go ahead in your life. तो इसलिए खाली टाइम अपना अच्छी तरीके से अकेले टाइम बिताया करो with yourself, so that you can think about, okay, what is that I like, what is that I want to do. And which is very important thing, because once you go to court you will not get this time. I mean, one thing that I really find myself lucky is that I figured out what I wanted to do in college, because when I see other people they're doing something, मतलब कुछ कर रहे हैं वो लोग, ये ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर रहे हैं. They're following seniors, they are going to good offices, they're joining, जो उनकी senior बोल रहे हैं कर रहे हैं, पर उनको there is this thing that they don't know why are they doing this. तो उनके पास what, why, how के आंसर नहीं होते हैं. And when you don't know why you are doing this, then at any point of time you can feel really stuck in life. I mean, imagine अब 10 साल तक आप प्रैक्टिस में आपको नहीं समझ में आया, फिर आपको एक दिन अचानक से एकदम existential crisis होती है कि why are you doing this? I mean, why are you doing law? Because and अगर आपका excuse है ना कि you want to earn money, that is why you are in this profession, मैं बोलूँगी please, I don't say this to I say this to everyone. If you want to earn money, start business, but get out of this profession, because this profession is, you will earn money, that's for sure. After a point of time, if you become a good lawyer, you will earn money. That is definitely. अगर आपने 5-6 साल 10 साल आपने यहाँ पे काम कर लिया है, पैसा कहीं नहीं जाएगा आपके पास से. That is, I think, if you're a good lawyer, you will get money. But वो आपकी primary motivation नहीं होनी चाहिए. Because if you want to earn money, I see a lot of people, मैं पूछती हूँ कि यार someone saying they want to become a police official, तो मैंने पूछा कि क्यों पुलिस में क्यों जा रहे हैं, क्या अरे बहुत पैसा आता है ना करप्शन का, वहाँ पे बड़े 2 नंबर की कमाई बहुत अच्छी है, इसलिए बनना है. And this should not happen with anyone, even if you're becoming a doctor, even if you're becoming a lawyer, even if you're becoming a police officer, teacher, it doesn't matter. आपको अपनी क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल बाद जब आप पूछोगे ना अपने why are you doing this, और आपको लगेगा, आपको मतलब समझ नहीं आएगा, अगर मुझे पैसे कमाने थे तो मैं कुछ और भी कर सकती थी, मैं यही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएंगी ये सारी चीजें. क्योंकि if you are when you love something, when you are passionate about something, then only you tend to accept bad things about it. तभी आपको वो थोड़ी बुरी चीजें होंगी आप एक्सेप्ट कर लोगे. जैसे सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अगर आप पैशनेट नहीं होगे,
आप अपनी फील्ड को लेके अपने आप को जो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, then you will get like really frustrated in this field very easily. People get frustrated, people leave litigation in 1 year. And सबसे ज्यादा important चीज, सबसे ज्यादा बार बार जो बोलते हैं ना lawyers, दूसरे lawyers को ये बोलते हैं कि it's a very difficult profession. टिक लोगे, you stay, if you survive here for 5 years, you will be a lawyer. And that is all you have to do. And people can't do that. People can't stick in this profession for 5 years because there is so much of stress. You have to be a really good multitasker. मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर्स को ना चलती फिरती कंपनी होते हैं. मतलब मैं खुद की चलती फिरती कंपनी ही हूँ अपनी. अब मुझे अपना काम, मुझे क्लाइंट से भी बात करनी है खुद, मुझे उनको काइंड ऑफ, अगर मैं बिजनेस के टर्म में इसको वो करूँ, मुझे क्लाइंट भी खुद लाने हैं, मुझे उनका काम भी खुद ही करना है, मुझे कोर्ट में जाके फाइलिंग भी खुद ही करनी है अनलेस एंड अनटिल आई गेट अ क्लर्क. अब मुझे कोर्ट डेट्स में मैनेज भी खुद ही करना है, कब कौन कितने बजे आ रहा है वो भी खुद ही करना है, कभी देखना है कि किस एक साथ 4 केस लग गए तो 4 केस एक साथ मैनेज कर रहे हैं. एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपके पास पैसे भी आ ही रहे सही टाइम पे, क्योंकि लॉट ऑफ क्लाइंट्स डोंट पे मनी बिकॉज उनको लगता है वकील सो दे यार कुछ भी तो काम नहीं है, ये वाई आर टेकिंग मनी, हमें तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं. सो बहुत सारा काम करना पड़ता है. यू हैव टू डू hell lot of things. You have to be good at 10 things at a time if you want to be a good lawyer. Multitasking तो बहुत important है. कभी कभी क्या होगा कि आप कोर्ट में हो, खाली हो, आप बैठे हुए हो, आपने कहा चलो मेरा खाली टाइम है, मेरा तो आइटम नंबर 80 है, मेरा केस नंबर 80 है, अभी तो बहुत टाइम आएगा, मैं अपना कुछ काम कर लेता हूँ. यू स्टार्ट वर्किंग, आपने ड्राफ्टिंग शुरू करी, स्विच करना पड़ेगा तुरंत से उस सिचुएशन में कि अच्छा आप 75 आ गया, मेरा आ गया, then you have to skip your mind. Sometimes you're working in a criminal case and then immediately you have to work on a civil case. इमरजेंसी आ गई तो आपको अपना माइंड स्विच करना पड़ेगा सिविल टू क्रिमिनल. These are the small things that I'm telling you that are difficult to cope up with. जो मुश्किल होता है कोप करना, ये इन्हीं सब चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. तो आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप अभी से जितना बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर सकते हो. स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग. बोलते हैं ना लॉयर्स को हमेशा पढ़ना रहता है. इतना जस्ट गिव योरसेल्फ टू रीडिंग. जजमेंट्स पढ़ो, अपना मतलब हॉबी बना लो. आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, बिकॉज इफ यू डोंट हैव, डाउनलोड इट टुडे. लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. कुछ नहीं तो आप अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लेते तो कुछ ज्यादा दिमाग में, बट मेक श्योर यू रीड एटलीस्ट वन जजमेंट. अभी स्टार्ट करो, नॉट वन जजमेंट अ डे बट एटलीस्ट 4 जजमेंट्स अ डे, क्योंकि अगर छोटे हैं तो आप दिन में एक पढ़ सकते हो, लेकिन आप जब बड़े हैं तो आपको टाइम लगेगा. बाय द टाइम यू गेट आउट ऑफ कॉलेज, मेक श्योर 300 पेजेस की फाइल आपको छोटी लगेगी, क्योंकि 100-150 पेज की फाइल बहुत छोटी मानी जाती है. इफ समवन इज गिविंग यू अ फाइल ऑफ 100 and 150 पेजेस, दे विल एक्सपेक्ट यू टू रीड इट इन 2 to 3 hours and know everything, and that's how much time it will take. तो आपको 300 पेजेस पढ़ना कुछ नहीं लगना चाहिए, यानी तो कुछ भी नहीं है. that's अगर आपको ये और ये सब अचानक से नहीं होगा कि हम तो कॉलेज जब जाएंगे, हम वर्क करेंगे, लिटिगेशन करेंगे, तब कर लेंगे. ये तो अभी से जब आप स्टार्ट करोगे, मुझे पढ़ने का शौक है, पहले से ही है, तो जस्ट so I was saying कि पढ़ने का शौक होना चाहिए. अब ये चीजें आप फेक नहीं कर सकते. यू जस्ट कांट फेक रीडिंग किया हो, माइंड हॉबीज रीडिंग. तो इसीलिए डेवलप करनी पड़ती है रीडिंग. एंड अगर आपको रीडिंग की अभी आदत नहीं है और फिर भी आपको लॉयर बनना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. एंड हाउ यू कैन डू इज यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स. कोर्ट में बहुत बारी, बिकॉज अगर मैं कोर्ट में हूँ एंड इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉ, मैं अगर आपसे अभी कोर्ट का एग्जाम्पल देने लग जाती हूँ, अपने केस की कोई बात करने लग जाती हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाओ. जजेस भी बोर हो जाते हैं एंड इट्स वेरी ऑब्वियस. मैंने जजेस को सुप्रीम कोर्ट में सोते हुए देखा है, वो सो रहे हैं ऐसे चप्पी ले रहे हैं. सो दिस थिंग्स हैपन. अब आप क्या करोगे? यू कांट से एनीथिंग टू द जज, बिकॉज मैंने पहले बता दिया आप कुछ नहीं बोल सकते जज से. वो सो रहे हैं, आपको पता है आपको सुन भी नहीं रहे हैं. यू आर मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपकी क्लाइंट की जान खतरे में है, वो जिंदगी और मौत का सवाल है. दैट पर्सन इज स्लीपिंग. इसीलिए आपको अपनी, इसलिए मैंने कहा यू हैव टू बी रियली गुड स्टोरी टेलर. तो बहुत सारे यू कैन रियली फॉलो श्याम दीवान. I'm telling you this name because he's a really good orator and he tells a lot of stories. He tells very nice stories in the middle. कभी-कभी वो बीच में शेक्सपियर कोट कर देते हैं कि okay, this is a very important what's there in a name, या कुछ भी. कॉन्वर्सेशन करना जज से, ये सारी चीजें कि जब जैसे ही आपको लगे कि जज इज नॉट लिसनिंग टू यू, हैव टू इमीडिएटली डू समथिंग टू मेक देम लिसन टू यू. सो इसलिए रीडिंग नॉवेल्स, ये इसी में भी हेल्प आते हैं कि आप अभी नॉवेल्स भी पढ़ोगे ना,
तो एटलीस्ट आप उन्हें कोर्ट में यूज कर सकते हो. इफ दे आर वेरी गुड नॉवेल्स, महाभारत तो बहुत कोट होने लगी है अब, जब से दीपक मिश्रा started doing it. Now they quote Mahabharat, Gita all the time because it has some really good quotes, quotations that will fit in your case. तो आप बिल्कुल बिंदास यूज करो. और लिखने की भी आदत डालो. सो इफ यू कैन गेट इनटू ब्लॉगिंग एटसेट्रा, ब्लॉगिंग की आदत डालना, कुछ भी लिखना, ये बहुत हेल्प करती है चीजें. बिकॉज अच्छी ड्राफ्टिंग वो होगी जब आप कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे. अच्छी ड्राफ्टिंग आप तब वो होगे और उसमें बहुत टाइम भी लगेगा जब आप अपने दिल से आप लिख रहे हो. आपको नहीं पता आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अपने ऊपर, जो कि अब थोड़ा बहुत मुझे भी आ पाया है अपने ऊपर, कि अदरवाइज पूछना ही पड़ता है लोगों से कि मैंने जो लिखा है वो सही है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप कुछ ना कुछ मिस कर ही दोगे. तो जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, ओके नाउ व्हाट आई हैव रिटन इज, आई डोंट नो इफ दिस इज रॉन्ग और राइट, बट मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज पे. नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट टू कोर्ट एंड व्हेन दैट थिंग विल वर्क, जब वो आपके फेवर में एक बार काम करेगी, दो बार काम करेगी, तब आप अपना स्टाइल बना पाओगे. और अपना स्टाइल बनाना लिटिगेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस अलग तरीके से चल रही है. किसी की प्रैक्टिस इसलिए चल रही है क्योंकि उनके फादर जज हैं, किसी की प्रैक्टिस इसलिए चल रही है क्योंकि उनके पापा लॉयर थे. और सेकंड जनरेशन वाले बहुत लोग हैं, और सेकंड जनरेशन के होने का बहुत फायदा होता है. सो if you are from second generation, you're going to have some advantages, and if you are from if you're a first generation lawyer, I'm really sorry to tell you that मैं भी first generation हूँ वैसे, तो बहुत difficult life हो जाती है, बहुत ज़्यादा difficult हैं चीज़ें यहाँ पे as compared to a person who is coming from a second generation. और ये privilege समझना भी ज़रूरी है कि आपको ये समझनी भी पड़ेगी बात. It's a thing that I completely hate. I don't मतलब बॉलीवुड की नेपोटिज्म तो छोटी है इन फ्रंट ऑफ लिटिगेशन. द काइंड ऑफ नेपोटिज्म दैट यू सी इन लिटिगेशन, इट्स क्रेजी. एंड people don't get opportunities because someone whose father is a judge or was a lawyer took it away, and that is a very bad thing, and that is something that I want to speak up for. मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आप भी जब आपके पास साथ भी ये चीज हो ना, ये तो you are able to understand, okay, this is something that is happening wrong, I don't like it, I am also a meritorious person, this is also a meritorious person, but this person is getting the chance, I am not even getting a chance only because this person's parent is a lawyer or a judge, and that is going to happen. बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट अगर आपको लॉयर बनना है, so you'll have to kind of loophole your way out of it, और आपको करना पड़ेगा डील. फिर जब आप अच्छे लॉयर बन जाओगे, तब आप लोगों की हेल्प करना, फर्स्ट जनरेशन वालों की, which a lot of people do right now, कि फर्स्ट जनरेशन वालों की हेल्प कर लेते हैं. That I have also made it a point that I don't think I'm going to, not that they will need it from me, but फर्स्ट जनरेशन वाले लॉयर्स को फर्स्ट जनरेशन वाले लॉयर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होते हैं सारे स्ट्रगल्स. सो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आएंगे. आप कैसे अपना स्टाइल अपना डेवलप खुद ही करना पड़ेगा. खुद वो कुछ टाइम बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो वो खुद हो जाएगा, कि बिकॉज व्हाट इज वर्किंग फॉर समवन एल्स माइट नॉट वर्क फॉर यू, सो यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर, कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ. एंड कुछ डिस्क्लेमर्स भी देना चाहूंगी मैं इसके साथ. One thing before I'll get your I'll get to the disclaimers. Important thing that you should keep in mind before going to is that I went to Moot. I did 3 Moots in my college, and I'm really grateful I did Moots, because Moot actually gives a first-hand experience of court. Court में क्या होता है exactly, and let me tell you, courts are little easier than Moots. That I'll tell you, because Moots में जो लोग आते हैं वो कुछ भी पूछ रहे होते हैं, they expect you to know everything on the spot, which doesn't happen in court. अगर आपको कोर्ट में कभी भी कुछ नहीं पता है बात, then don't say the wrong thing like I said, but take some time. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जज might not give a date, but generally it doesn't happen कि जज ने आपसे कुछ पूछा है और आपके पास उसका जवाब नहीं है, उल्टा सीधा आंसर. don't give उल्टा सीधा आंसर. just say to the judge, give me some time, put this case on list for tomorrow, या फिर मैं कल I'll get the answer, परसों I'll get the answer. take some time from the court, जो moot में नहीं होगा. So I think moots are little bit courts are little bit easier than moots, पर moot करना बहुत important है, because I'll share my personal experience with you. is I was in moot and we were doing really well. बहुत अच्छा moot था वो, and हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिसर्च करी थी. we prepared the whole case so much so that जो टॉपिक हमारा था डेटा प्रोटेक्शन वाला, आज तक वो इन टॉपिक ही है, एंड आज तक उतना ही डेवलप हुआ जितना मुझे पता है. सो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस
था ही, but what happened was we cleared the first round, second round, third round. Last round में something happened, I froze. जो कि होगा, आप जब कोर्ट में जाओगे ना पहली बारी ऐसे करके कप कपा रहे होते, नो मैटर व्हाट, आई एम इनटू सो मच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट मेरे साथ भी हो जाता है ऐसे करके ना, बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं और एकदम बहुत डर लगता है कोर्ट में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और उसमें आने में आपको टाइम भी लगेगा और हमेशा होगा वो थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट लॉयर्स रियली लाइक, क्योंकि जो कोर्ट में आने से पहले जज के सामने से आने पेट में कुछ हो रहा है, वो दैट इज वन थिंग दैट लॉयर्स लिव फॉर, तो वो हमेशा होगा भी आपके साथ, वो थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी नर्वसनेस बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, बट you don't have to freeze, you can't freeze, and that's what happened with me. I froze. In my mood I could not say, मतलब होता है ना एक कहावत हिंदी में, चेहरा लाल पड़ जाना, मतलब हवाएं ही उड़ जाना, that happened with me. I don't know why that happened with me, but it happened. So I took some time, I drank some water, I got back to it, but I definitely lost points for it. ये कोर्ट में नहीं होगा, अगर कोर्ट में अगर आप आपके ऐसा हो गया आपके साथ, तो आपकी गलती की सजा आपको क्लाइंट को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, आपको या तो बोलेंगे थोड़ी देर बाद आ जाओ, या फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा if the person, if the judge is nice, और judge will also make you try to feel comfortable, वो भी सब होगा, but God forbid आप नहीं बोल पाए, आप एकदम फ्रीज हो गए, आपको पता ही नहीं, आपका ब्लैंक माइंड ब्लैंक हो गया, जो कि होता है लोगों के साथ, वो नहीं होना चाहिए ऑन आवर इम्पोर्टेंट डे. सो इसलिए मूड से आपका, अब मुझे पता है मेरे साथ वो कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव whatever happened that day, I remember it, and I'm like gladly remember it as my learning experience, that this can't happen in court. अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, मुझे डर नहीं लगता कोर्ट जाने पर, I am not scared before appearing before the judge, that's not the case. I am nervous, I'm anxious because I don't know what they'll ask for, I don't know if I know enough, I don't know if I've read the file enough, so all of these questions, things will happen, but you can't फ्रीज, एंड वो जो मूड्स इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. एंड सेकेंड, एक और चीज जो है कि अभी अभी आप पे अ लॉट ऑफ टाइम इन योर इंटर्नशिप्स, यू स्पेंड जितना भी टाइम हो सकता है, अगर आप अपने कॉलेज के बाद भी किसी लॉयर को ज्वाइन कर सकते हो, नो लॉयर विल से नो, बिकॉज एवरीवन लव्स फ्री लेबर, लेट मी टेल यू द ट्रूथ. सो अगर आप अपने कॉलेज के बाद भी किसी लॉयर से जाके बात करो, एंड कि आई वांट टू इंटर्न विद यू, मैं अपने कॉलेज के बाद आ सकती हूँ, सो देन कैन आई वर्क विद यू, आप एक लॉयर के पास जाओगे मना कर देंगे, दूसरे लॉयर के पास जाओगे मना कर देंगे, बट यू विल फाइंड सम लॉयर्स. So if you can give a lot of time to your internship right now, that will be a really good experience, because एक तो जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर बुक में पढ़ना अलग है, कोर्ट में बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. हाउ टू डील विद रजिस्ट्री, हाउ टू डील विद क्लर्क, हाउ टू डील विद कोर्ट मास्टर्स, और आपको शायद ये टर्म्स अभी समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, तो ये सब को कोर्ट में जाने की ही बात पता चलेंगे. So if you will start going to the court, you will get really familiar with that thing. For example, I have gone to the Supreme Court more times than I have been to High Court for that matter, और lower courts में भी. मैं जैसे कड़गड़डूमा कोर्ट कभी नहीं गई, तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट में, आई एम so confident, I'm like really still comfortable in going to Supreme Court and even doing my case there rather than going to Kargaduma Court, because I don't know, मैं कभी Kargaduma Court नहीं गई, मुझे पता ही नहीं वहाँ पे, I'm completely blank about it. And obviously Kargaduma का की केस का लेवल, Supreme Court के केस का लेवल is this different, but it's just that because I've been there, I'm familiar with that place, so it becomes easy for me. So इसीलिए कोर्ट जाना, अपने दोस्तों को लेके चले जाओ कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो इंटरेस्टिंग, यू विल नॉट इवन गेट बोर्ड. फैमिली कोर्ट में कभी भी बैठ जाओ, क्रिमिनल कोर्ट में कभी बैठ जाओ, जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं आपको लगेगा मूवी चल रही है यहाँ पे. So if you're really passionate about law, you will find it as more interesting than movies. So start doing these things. If you have a group, a friends of group, जो कि बहुत जरूरी है, एक पार्टनर भी होने चाहिए, मतलब कोई ऐसा पार्टनर भी होना चाहिए जो आपको ना लिटिगेशन में भी साथ में बहुत अच्छी बात है. और एक सीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है एक मेंटोर. यू कांट डू इन दिस प्रोफेशन विदाउट अ मेंटोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड इट्स नॉट कि आपको हमेशा एक मेंटोर मिल ही जाएंगे, बहुत लकी लोगों को मिलते हैं. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मेंटोर एंड नॉट फाइंड इट, बट you should have at least 3-4 people you can go to, you can ask and confirm, क्योंकि आप अपना केस जो आपने बनाया है, I have seen people with 20 and 30 years of practice also, they still go to the senior and confirm करते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है, we can file the case, अगर वो first time कुछ ऐसा केस कर रहे होते हैं. So ये mentorship, लोगों से पूछना, 4 लोगों से बात करना, discussions are so important in these things. Discuss with your friends. आप अगर किसी भी केस आपको करने का मन है, PIL भी करने का मन है, आप करो, स्टार्ट कर दो, फिर डिस्कशन तो स्टार्ट करो फ्रेंड से. सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स you will find in the discussions only. Discuss with your teachers.
argue with your teachers openly. These are the things that will help you. These are the things that will give you answers. Nothing else will. कोर्ट में तो आप जितना जा सकते हो, आप जाओ इंटर्नशिप में, छोटे छोटे जितने भी काम कर सकते हो आप, प्रोसीडिंग देखो, फाइलिंग कैसे होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं, एक होमवर्क तो आई हैव गिवन यू ऑल, दैट यू डाउनलोड लाइव लॉ एंड यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इट. सेकंड होमवर्क इज दैट यू गो टू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट एंड यू like know each and everything about it. कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट क्या क्या है, what is the information that is there, and after that you also should go to the Bombay High Court की वेबसाइट और गोवा की वेबसाइट, or the High Court of your respective state, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट और यूपी इलाहाबाद की वेबसाइट, जो भी है. बट आप आज ही, मतलब अभी आपको ये सारे वेबसाइट चलानी तो आनी चाहिए, क्योंकि अभी, because this digital is new, a lot of lawyers don't even know how to browse the website. That excuse you can't take, because now you have 3-4 years तक काफी सब डिजिटल हो जाएगा, so you'll not be able to make these excuses or give these excuses like कि वेबसाइट में नहीं था, हमें पता ही नहीं था वेबसाइट पे, because there is so much of information on the website itself. Judges के name, judges, like recently I was browsing this Delhi High Court की वेबसाइट, I did not know. तो वहाँ पे एक वो मिला, एक PDF थी, उसमें सारे जजेस ने ना अपनी असेट्स डिस्क्लोज कर रखी हैं, बिकॉज अपेरेंटली दिस इज अ लॉ दैट जजेस हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स, उनकी पर्सनल एसेट्स की, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, उनके पास क्या क्या है. सो आई डिड नॉट नो ऐसा भी कुछ लॉ है कि वेबसाइट पे होना चाहिए. नाउ ऑन दैट वेबसाइट every judge of Delhi High Court has declared their assets, कितने assets, and this is to prevent corruption. Now, if you'll also go through it, you will see that, find that list, और उसमें कितना झूठ और साफ सच है वो तो that only court knows and God knows. But it was an interesting thing too, because I'm not interested in looking at the assets of the judges, but I was more interested in, okay, there is a law that exists कि जजेस को अपनी assets disclose करनी होगी, and अगर वो डिस्क्लोज कर रखी है तो कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, तो then you know things can get bad. So internships, these are the, I'm just giving you a summary of all of these things कि क्या क्या बहुत important है. लाइव लॉ पढ़ना बहुत important है, लाइव लॉ और बार बेंच फॉलो करना बहुत important है. इंस्टाग्राम पे अपने, अगर आप यू आर नॉट फॉलोइंग knowledgeable pages, you start following these pages. And second, participates in Moot. वेबसाइट को पूरा ब्राउज कर दो, वो लाइव प्रोसीडिंग्स, एंड रीड एज मच एज यू कैन, रीड जजमेंट्स एज मच एज यू कैन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट ऑल्सो. वहीं से शुरू करो, छोटे छोटे जजमेंट्स पढ़ना शुरू करो, एंड रिसर्च अबाउट लॉयर्स. वो तभी पता चलेगा जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखोगे, क्योंकि नाउ आई कम टू यू नो द डिस्क्लेमर पार्ट, जो मैं वार्निंग्स देना चाहूंगी यहाँ पे. लॉयर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लॉयर्स आर manipulative. So in one of the offices that I was in, a lot of lawyers, you know, will always make you feel that you're not good enough. They will make you feel कि अब जो हो वो हमारी वजह से हो. You are working in our office, we are your senior. अगर हम आपको senior नहीं होते, हम आपके mentor नहीं होते, तो आप कुछ नहीं होते. I think that's a very very problematic thing in this profession, because people join this profession with a lot of zeal, with a lot of confidence. अगर आपको लेकिन रोज कोई आपको ऐसे ऐसे बोल रहा है कि you know you're stupid, you're not good enough, you can't do this on your own, you need my help, आपको कॉन्फिडेंस कम होते चले जाता है, which is lot of lawyers do in this field. I've seen lot of people do this field, do this thing. So आपको ये सब चीजों को ख्याल रखना है. You will never ever be able to decode a lawyer. I like to use the word poker face. Lawyers have a poker face. You can't read them, you can't find out what they are thinking. Same with judges also. So तभी वो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है. So you know they have this poker face. You don't know कि आप क्या कह रहे हो, उनको कब, क्या उनके बेनिफिट की बात है, क्या आपके बेनिफिट की बात है. We'll just I'm just about to finish in like 5 minutes, then we'll start with the questions. Everyone who wants to ask a question, because this is my last segment. जो मैं डिस्क्लेमर्स दे रही हूँ, जिन जिन चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना है. A lot of lawyers will also try to fool you. Please don't let that happen. Please trust lawyers very very carefully. ऐसा नहीं होगा कि सारे lawyers खराब हैं. That is definitely not possible. But ऐसा भी नहीं है कि सारे lawyers अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं है that lawyers support fellow lawyers, या फिर हम lawyer में हैं तो so you know I will not try to fool you. That is, I think that comes that after a point of time वो इतना
के अंदर वो मैनिपुलेट या फिर ये सब चीजें करते हैं, they don't even realize they're doing it. They do it in their personal relations also. क्रॉस एग्जामिन करने लग जाते हैं पर्सनली अपने पर्सनल फ्रेंड्स को या लड़ाई में ऐसे करके, they don't even realize that. So आप you have to be very careful in trusting a lawyer, but never trust anyone blindly. आप किसी पे भी बिल्कुल blindly मत करो. जो भी आपसे वो कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए भी वो कह रहे हैं, आपकी बुराई के लिए भी वो कह रहे हैं, आप उस पे अपना खुद दिमाग लगा के एनालाइज करो. You have to get in this habit of using your brain all the time and thinking, okay, I have to use my own brain and I have to figure out my own good and bad, and never lose your confidence in this process, because that is a बहुत डांट लगती है, सीनियर्स बहुत डांट लगाते हैं, जजेस सुना देते हैं, आपका ईगो एकदम थ्रैश कर देंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जी उड़ जाती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, बट व्हेन यू गेट आउट ऑफ द कोर्ट एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट. अगर आप गलत करो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट हो जाता है लॉयर्स के अंदर. बट इफ यू आर राइट, इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, and you should be able to stand with your affirmation or जो भी आप अपनी thinking है. And one thing like I say is मतलब कुछ टाइम पहले मुझे ये थोड़ा क्वेश्चन हो रहा था कि यार I don't know what to put in a case, what to not put in a case, what to say in a court, what not to say in a court. And I think ये बहुत easy हो जाता है if you are on the right side. बिकॉज अगर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, होगा जब आप अपने ना ड्राफ्टिंग करोगे, मुझे ये बोलना चाहिए, बात कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए, या फिर मुझे बात छुपानी चाहिए या नहीं छुपानी चाहिए. बट व्हेन यू डोंट नो, आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, यू आर सो कंफ्यूज्ड वेदर यू शुड से इट और नॉट. इन दैट सिचुएशन यू शुड लिसन टू योर हार्ट, यू शुड टेल द ट्रूथ. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ, इज बिकॉज अभी तक आई हैव नॉट डिफेंडेड लायर्स. तो मुझे मेरे ऑल द क्लाइंट्स दैट I have been on the right side. So अगर मुझे कभी कुछ confusion होती है, then I always go with the truth. जो सच है वो रख दो. It will not go बहुत बड़ी गलत बात तो नहीं हो जाएगी इससे. If anything goes wrong, lawyers have a primary job of fixing mistakes. Like lawyers are basically, their problem is to fix mistakes. So with all of this, I hope इतनी सारी जो मैंने बात बोली, मैंने कोशिश करी अपने आपको बताने की. I hope it was helpful. And now we can start with questions. We already have some questions in chat, so मैं वहाँ से start करती हूँ. How it helps the people when they appeal to the higher courts after losing their case in the lower court. There are chances of कि उनकी appeal उनके favor में आ जाए decision. So if let's say lower court में decision was against you for whatever reasons, you will appeal to the higher court because decision आया है declaring your client a murderer, which he's not, and he has not done it. Obviously, you will go to higher courts in appeal to get it reversed. Ma'am, which college are you from? I am from Delhi University, Faculty of Law. And Owais Malik, I'm BA LLB first year student. I want to internship after ending of first semester, but in my college there is not single subject related to law in my syllabus. How can I learn the basic thing which will be helpful when an advocate asks? Okay, so I think more or less I have answered this question during my session. If you can't find an internship or you can't do the internship, you start with books, you start with website, and you start with live law judgments. You start reading judgments. कुछ नहीं, अब तो सब कुछ free है. If you'll read judgments, a lot of things will be clear to you, and it's as good as working under a senior. क्योंकि सबसे important चीज at the end of the day आके judgments ही रह जाता है. तो अगर आपको and what happens with judgments is that because judgments तो रोज ना आते रहते हैं ना, and if you will not keep yourself updated with the judgments, तो बहुत अच्छी relief आप अपने client के लिए fight नहीं कर पाओगे, which already existed in the law, but you did not know because वो judgment अभी कुछ दिन पहले और आपने पढ़ा ही नहीं. So this should not happen. इसीलिए कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है lawyers को, क्योंकि उनका इस चक्कर में तो केस नहीं हारना चाहिए, because they did not know कि वो एक judgment था. So I think that's a good way to start. You start reading judgments. Owais Malik, if you have any other question, you can ask. When an advocate will ask me about the law-related things. Okay, this is the same thing. Ask me about law-related things. And basic things are, I think, include going to courts, just sit there, एक दिन clerk के साथ time spend कर लो, आप उनसे पूछ लो filing कैसे होती है, because we are lawyers, so
filing is not going to be a process that is going to be very difficult for us. So ये सारी चीजें आप पहले ही figure out कर सकते हो. आपको advocate की भी जरूरत नहीं है. पहली internship you can do it with a clerk also. आप clerk के साथ घूमना शुरू कर दो किसी के साथ भी, and will be happy to. Clerk are the nicest people in courts. Only clerk are the nice people in courts. So clerk also teaches you a lot because वो पूरा handle कर रहे होते हैं काम. They are managing a lawyer. Okay. Shaurya Malhotra is asking, what you just said about SC website, I just missed it because of weak connection. I said go through the website. There is a website, sci.gov.in, which is a Supreme Court website. Just go through it. Whatever there is in the website, time pass karo. Like you are scrolling on Instagram, you scroll that website. You learn a lot of things. Bhagyashri, now you can ask the questions. Yeah, good evening, ma'am. Actually, I want to ask that in moot courts, our teacher said that we have to present both the sides, right? Petitioner and respondent. So, how can we prepare for the both the sides? Because that the memorial will be too long, right? So, how can we prepare? Okay, how it goes in court is that you have to, and it's a really good exercise. By the way, it's a really, really good exercise to prepare from the cases from the both ends. And you should not, forget this thing when you're preparing your cases. जब आप वो भी केस प्रिपेयर करोगे अपना खुद का केस भी, तब भी आपके पास दूसरों की साइड से सोचने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो भी सेम चीज आपने आर्ग्यू कर रहे हैं तो आपके पास वो काउंटर होना चाहिए. So what happens in court is that you prepare two memorials. You have a client, you will have a story. I'll take the practical example of my own moot only. Sabrimala wala moot, in one of the moots, we got the topic of the Sabrimala moot, that Sabrimala temple so we had to prepare saying women should be allowed in the temple, and we also had to prepare saying women should not be allowed in the temple. So फिर क्या होता है, फर्स्ट राउंड में पर्ची और चलती है, and then you get a side petitioner or respondent. For the first round you have to argue as petitioner. So जो आपने साइड जो petitioner वाला तैयार किया होगा, that you will fight for. अगर आप फिर आपको एक बार करना होता है दूसरी साइड से, राउंड 2 में respondent साइड से, फिर दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, तो वो दो अलग अलग मेमोरियल बनते हैं, मतलब दोनों अलग अलग मेमो बनते हैं. So फिर जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं वो आगे जाते हैं, फिर उनका फिर पर्ची चलती है, फिर वो एक साइड पे स्टक करते हैं. तो फर्स्ट राउंड में दोनों साइड से आर्ग्यू करना होता है. सो यू हैव टू मेक टू मेमोरियल्स, एंड यस, इट्स अ टीम वर्क. लेंथी तो है. ओके, एनीथिंग एल्स भाग्यश्री? Yeah, one more question I want to ask, ma'am. Yes. Pursuing advocate, if you're a lawyer, you can do, right? Your voice is breaking a lot. So it is compulsory. Your voice is breaking a lot. I was not able to. Actually, I'm asking, ma'am, that. Can you type your? Now it is clear, ma'am. It is clear now. Yeah, I'm asking that in Advocates Act it is mentioned that if you are a lawyer, then you cannot work in any government jobs or in private sectors. So it is compulsory because our teachers has also pursued a lawyer, right? They had also taken the sanat, so they are also teaching as a professor, no? Mm-hmm. So how they are allowed to teach or do a job of professor? बहुत interesting. Like, it's a good question, and I'll answer in detail. थोड़ा सा. Law, there's a law that exists. Lawyers have a job of finding loopholes and molding the law. So if they want to work the law for themselves, so बहुत सारी situation होती है. First of all, part-time is allowed. Part-time in legal field is allowed. So it's completely allowed that you are a part-time professor and a part-time advocate. There are lots of advocates like that in Delhi. वो अपना पढ़ाते हैं, उसके बाद court proceedings भी advocacy भी करते हैं. How it's only a part-time job. You can't get a full-time job, non-lawyer job. So a non-lawyer full-time मतलब part-time भी नहीं हो सकती. Although I completely disagree with this because अगर आप first generation वाले lawyer हो, this law is nonsense. Because आपको पहले साल में 2-3 साल में आपको पैसे नहीं मिलेंगे. If you don't have a background, if you don't have a financial background, your family supporting you financially, and you want to do law, how will you survive? You can't survive in 20 or 15, 20 or 10, पता नहीं उससे भी कम देते हैं वकील. So how are you going to survive unless and until you have a part-time job? So that's not such an issue. Just don't do anything in writing.
another thing that happens is that when you get a job, like a corporate job, so corporate job mein you'll have to give up the license. You will not be allowed to practice as an advocate. But वहाँ पे क्या होता है? Like I said, lawyers will mold the law for themselves. Why not? So they don't sign the contract, they sign the retainership. Retainership allowed होती है ना advocates को. So वो अपना contract खुद try वो करते हैं, retainer पे आ जाते हैं. So retainership is allowed, part-time work, law work is allowed. If you are doing part-time any other thing, that is also not a problem, but you should not be on salaried basis. Basically that is a law कि आप salaried basis पे कहीं नहीं काम होने चाहिए. If it is not legal, but retainer चलेगा. It's the same thing. More or less for a common person आपको retainer मिल रहा है 1 महीने का, 10,000 आपको salary मिली, 10,000 की एक ही चीज़ है, but it's a word, just a play of word. Anything else? Yeah, thank you, ma'am. Okay. What is the aim of Switcher Foundation? Okay. So we are working on a lot of things, and first, one of the most important things is that we are working on implementation of laws, which specifically include prevention of sexual harassment laws and transgender laws, mental health and maternity, all of the gender right and women right laws, POCSO Act. इन सब चीज़ों पे we are working on the implementation of it. Primarily इसमें हमारा prevention of sexual harassment and workplace हमारा main goal है, उसकी implementation पे काम करना. Awareness and judicial activism is one of other things. So we are also involved in filing cases and filing pro bono cases in courts and PIL that will be upcoming. We also have a program for children. So basic aim of Switcher Foundation is to implement the law and to create awareness and reduce sexual abuse. कि कैसे उसको reduce करा जा सके, किस तरीके से. And in long-term projects will also include criminal reformation. The thing I'm telling you is that because you are from legal field, so बहुत सारी चीजें ऐसी हैं that we are not able to do in our NGO right now because of our resources. But criminal reformation is one of the main aim, and victim rehabilitation is one of the aims of Switcher Foundation. What is Switcher about? I've answered this question. Ma'am, how to draft memo for a defendant in Moot? Okay, I'll answer is from how to draft on the basis of case. मतलब you have to defend a client, and that's how what is the question is. So first thing is you get your facts very clear. फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉ क्लियर होना. तो सबसे पहले अपना लॉ पढ़ो. लॉ को एक बार नहीं 10 बार पढ़ो. वट एवर लॉ इन्वॉल्व है. सो इफ देयर इज अ केस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी. हिंदू सक्सेशन भी पढ़ना पड़ सकता है आपको, कोर्ट फी एक्ट भी पढ़ना पड़ सकता है आपको, ट्रांसफर पिटीशन भी पढ़ना पड़ सकता है. सब कुछ पढ़ना पड़ेगा वट एवर द लॉ इज इन्वॉल्व, एंड यू हैव टू रीड दैट एटलीस्ट 4 or 5 times. एक बार कभी आंसर नहीं मिलता, 2 बार आंसर नहीं मिलता, 3 बार आंसर नहीं मिलता है, चौथी बार एक चीज आंसर मिलेगी that will be favorable to you. So what you have to do while drafting anything and preparing a case, you have to find things that works in your favor, judgment in your favor. Judgment तो ऐसे ही होता है. So let's say you have a situation. I'll deal with the example of this. एक case के example से बता रही हूँ. There was this case of property dispute that I was dealing in, and उसमें family settlement sign हो रखा था. So that family settlement is not same thing as partition. मतलब family settlement अलग होता है, but during the course of the court as the case developed, बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स भी आ गए. प्रॉपर्टी भी बहुत बीच में इतने लंबे टाइम तक चलते हैं तो जजमेंट्स आते हैं. सो देयर वाज दिस जजमेंट जो मैंने पहले पास पढ़ना शुरू किया. लाइक माय थिंग वाज प्रॉपर्टी. मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. सबसे पहली चीज आपको रिसर्च ही करना स्टार्ट करनी है. अगर आप जजमेंट्स रिसर्च करोगे आपको खुद ही आंसर मिल जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन से. सो यू जस्ट रिसर्च, यू स्टार्ट रीडिंग केसेस. कोई ना कोई केस आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके फैक्ट्स आपके केस से बहुत सिमिलर होंगे. जब आपको वो केस मिल जाए देन यू आर प्रिपेयर्ड. आपको नहीं मिले तो आपको 2-4 केसेस मिला के आपको कहीं से अपना आंसर निकालना पड़ेगा. आपको आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा. इसमें तो ये कहा था, इसमें तो ये कहा था, लेकिन ये वाली बात इस पे अप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे केस में ये भी था, इस केस में भी ये है. इसमें भी फैमिली सेटलमेंट था.
मेरे में भी फैमिली सेटलमेंट है, इसलिए दिस केस वर्क्स इन माय फेवर. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना स्टार्ट कर देना. तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन आस्क फॉर इन कोर्ट. सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए, आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, प्रेयर इज द रिलीफ दैट यू आर आस्किंग फॉर इन कोर्ट. और वो आप हमेशा अपने क्लाइंट से पूछोगे या फिर मूट में तो आपको बता दी जाएगी. क्लाइंट से ये पूछना बहुत जरूरी है कि उन्हें चाहिए क्या. अदरवाइज लॉयर्स अपनी तरफ से कुछ भी प्रेयर डाल देते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं. यू आस्क देम व्हाट डू दे वांट, एंड लॉट ऑफ टाइम्स क्लाइंट को नहीं पता होगा तो आप उन्हें बताओगे इन्हें क्या क्या मिल सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम हुज कमिंग टू मी, उनको नहीं पता होता पॉश एक्ट के बारे में. उनको सिर्फ एफआईआर पता होता है, उनको नहीं पता होता कि उनको छुट्टी भी मिल सकती है, उनको नहीं पता उन्हें कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है. ये सब बता, तो ये सब बातें मैं बता देती हूँ. ये बताने के बाद आप उनको बताने के बाद कि आप ओके, यू आर एंटाइटल्ड टू दिस मच थिंग एंड नाउ व्हाट यू नीड. तो सबसे पहला जो ड्राफ्टिंग या आपको जो ड्राफ्ट मेमो बनाते हुए सबसे पहली चीज लिखनी जो है वो आपकी प्रेयर होनी चाहिए. क्या, व्हाट आर यू प्रेइंग. सेकंड नंबर स्टेप पे आना चाहिए आपका लिस्ट ऑफ डेट्स और synopsis. Ma'am, can you guide about judiciary exams and some basics? Okay. So judiciary ka I would not have a lot of idea because I've never been not that interested in judiciary exams. But if you have some specific questions, I can ask you. Like judiciary exams, maybe there are books I think that comes, and आते तो मोस्टली केस लॉ और केसेस के क्वेश्चंस ही हैं. आप प्रिपेयर कैसे करोगे इसमें भी मतलब जजमेंट्स पढ़ना ही थोड़ा इजी होता है, थोड़ा इजी हो जाता है आंसर याद करने, क्योंकि जजमेंट सारे कहानी के बेस पे होता है. जुडिशरी में बस एक दो चीज और ये है कि आप बस जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट सजेशन दे सकती हूँ वो यही होगी कि आप सारी जगह के फॉर्म फिल जैसे जैसे आते रहे ना, फॉर्म फिल करते रहे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जुडिशरी, यू लर्न, यू स्टडी एज मच एज यू कैन, फॉर्म फिल कर दो हर स्टेट के और आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा. एंड आई थिंक जुडिशरी में तो एग्जाम्स कभी खत्म नहीं होते हैं. एंड यू शुड आस्क, ऑनेस्टली आस्क दिस क्वेश्चन समवन हु इज अ judge or maybe preparing for judiciary. Okay. Ma'am, Can 1 minute. Yeah. चैट बॉक्स में एक लिंक है जिसके थ्रू आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बट जो लोग हैं उन्हें ही प्रोवाइड करेंगे, इसलिए फॉर्म फिल करना होगा. वहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू हम सेंड कर देंगे. बस चैट बॉक्स में वो लिंक है, वो फॉर्म फिल कर लो, गूगल फॉर्म. वैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आई विल टेक लास्ट. हाँ, मैं भी यही बोलने वाला है, बहुत ज़्यादा है. सो हाँ, मैं ना बस लास्ट 5 क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं वो वाले ले रही हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा काम के लग रहे हैं. Can you say something about corporate law? Like how is it? I don't like. I had nothing to say about corporate law. I don't like it. It's like any other job. Unless and until you are going to a litigating firm like Karanjawala and Co. और वो तब तो उनका कोर्ट का काम होता है. अदरवाइज कॉर्पोरेट लॉ इज लाइक जस्ट सिटिंग एंड मेकिंग ड्राफ्ट्स. आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा. इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग. From where we have to start our internship, from high court or district court. You start from district court. What to do if a client and I think good advice is one mistake I consider is a mistake that I went straight to Supreme Court, although उससे मुझे फायदे भी हुए हैं, ऐसे नहीं है, but I should have started from district court now because सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो डिस्कशन चल रहे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन चल रहे होते हैं मोर और लेस इट बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू कांट बी अ गुड एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट एक बार आप आ जाते हो ना, फिर वहाँ का वो इन्वायरमेंट, वहाँ की सीरियसनेस, वहाँ का ये सब जो होता है वो उसकी आदत हो जाती है. तो और सबसे ज्यादा कम काम एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में होता है क्योंकि वहाँ पे केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम आते नहीं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज आपका केस लगा है, आपको सुन लिया जाएगा इन डेली. एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू लिटिगेशन इज रियली गुड एंड इज probably the best state to practice in India. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम होता है, हाई कोर्ट में काम होता है. सुप्रीम कोर्ट में देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि केस आते ही नहीं. आज नहीं आया, कल भी आएगा, लेकिन कल भी नहीं आया, परसों भी आएगा. So you have to prepare every day, but cases doesn't come. Is NGO good option for some? Yes, my first internship was also in an NGO. And it was because I was interested in social cause. If you are interested in social cause, then you surely should join some NGO. And you can also join some NGOs working on legal causes, so that will be a mixed internship. Switcher name I decided for foundation. Su is from Spanish, which means his, her, their choice. Icha means choice. So we are trying to say we are promoting your choice, his choice, her choice, their choice, free choice. You want to join law firm?
Which type of farm would be better? Like small farm. Go with small farm. Big farm will get you names. आपका CV बहुत strong कर देंगे. जब आपको job मिलनी होगी वो मिलेगी. लेकिन big farm doesn't have a good atmosphere. And जो छोटे farms आपको जितना सिखा सकते हैं, जितना आपको experience आपको मिल सकता है, वो बड़े farm से शायद ना मिले. Rape cases don't directly go to first session court. How to improve the confidence and communication skill. I think ये सब के लिए तो बहुत लंबा आंसर चाहिए होगा. ये हम इस पे कभी हम सेशन कर सकते हैं next time अक्षय, because these are the questions that I think will need very detailed answer. How can we get clients? It's the most difficult question, and I will not be able to answer this because I'm still trying to figure out. And that is, you'll have to figure out your own thing. No one will tell you if how people get clients, but it's mostly networking, because lawyers का काम बहुत trust का होता है. If you say to someone, I'm a good lawyer, hire me for a case, even if you are a good lawyer, you will not. There are chances that person will not come to you. But if you say, Simran is a good lawyer, you should go to her. People will go to Simran because trust की बात हो जाती है. तो you really have to build that trust, and which is why networking is very important. कि आप लोगों से मिलो, और ये सब जो networking छोटी-छोटी चीज होती है, you have to create your trust with a person. Only then people will give you cases. जो basic चीज अभी मुझे बताइए, and you can't do anything to get the clients. You just have to do your work. One thing that I know surely works is आप जो भी केस आ रहा है ले लो, एक केस से दूसरा केस आते ही आते हैं. That how it works. बाकी आप लोग नए लोग हो, ये सारे मैं पुराने मेथड बता रही हूँ. When you after 5 years, lot of things will change. 4-5 years, so you can make your own ways on how to get clients. And one big problem with clients is also that if they're coming to you, but they always want experienced person, because उनको चाहिए होता है, because again the trust issue comes कि जिस पर trust है हम उसको ही केस देंगे. So they also have a problem. They will trust, or they will hire senior in place of you, even if you're doing the whole work. ये कोर्ट में बहुत चलता है. सीनियर है, जूनियर है, काम सारा जूनियर ही कर रहे हैं, लेकिन जूनियर केस सारा जूनियर ही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो जूनियर के पास नहीं आ सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट unless and until you have some exceptional skills. Client will come to senior क्योंकि वो आप पे भरोसा नहीं करता. So client also choose senior people. Doesn't matter if they are good or bad. They have this thing, and it goes against the client only. KP Singh have asked, because it's not a thing that can be done in one. He's saying that, can you please explain? A lot of NGOs are working on the same thing, but evil is not wiped out. Obviously, it's a first rule of society also, that society can never be crime free. जब तक लोग हैं, जब तक इंसान है, तब तक crimes होंगे. There'll be good and bad. There'll be good and evil. So we'll never wipe out evil. We're only trying to reduce rape, which will take a lot of time, and that is the best case. Okay, so I think I'll just stop there, because right? Any other questions, important questions that you have? बहुत ज़्यादा है. We'll surely have another session on the basics. चैट बॉक्स पूरा भरा हुआ है क्वेश्चन से, तो अभी मैंने बस एक तो छोड़ दिए हैं अभी, but I think we'll have this another time. Don't worry about it. And that's it for today. And one last thing that I would like to say to everyone is a very important life goal. You can just write it down. It doesn't matter if you're a good lawyer. It doesn't matter if you're a good judge. It doesn't matter if you're a good doctor, good anything. If you are not a good person, it doesn't matter. And that is one most important that you all have to learn. You can be all of you are capable of becoming a good lawyer here, but your priority should be to become a good human, because that is, the answer to your question, why are we not able to reduce evil from the society? Because people are not want to be good humans. So that is one thing. Thank you so much, ma'am. At the end, I would like to call Dhanashree Karnik for vote of thanks. Over to you, Dhanashree. So that was truly an intellectual fest, and I'm sure each one of us would have definitely learned something new, which will indeed help us in our career. So without taking much time, on behalf of the organization,
I, Dinashri Karnik, take this opportunity to present vote of thanks for such an insightful session. We are privileged and grateful to have you here, ma'am. Thank you for giving us your valuable time and sharing us your precious knowledge. I would also like to thank the organizers for this, Law Awareness Society, Legal Innovation and Youth Investors Association, President Akshay Darade. Last but not the least, I would like to thank all the audience for being patient listeners and active participants. Thank you. I would request all the participants to fill up the form which is provided in the chat box. Thank you. Here we conclude our session. गाइस वेट करो एक सब लोगों का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं प्लीज़ एक जरा जो if you can put me on pin, एक फोटो वैसे भी ले लेना. With my video. ओके 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 Just one photo like that. ओके मैम Okay. Thank you. Bye bye. सारे लोग एक बार प्लीज़ ओपन कर लो अपना कैमरा एक फ़ोटो लेते हैं सब लोगों को ओके थैंक यू सो मच गाइस Okay. Bye bye. हमें मैम को भी और स्विचा फाउंडेशन के पेज को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो Please, everyone, please follow us on Instagram. Nobody wants to follow good things and NGOs on Instagram. So please, everyone follow that. Already follow us. Thank you very much. ओके और इंस्टाग्राम चलो थैंक यू सो मच गाइस Thank you, ma'am. Thank you, Akshay.